Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 13th of Feb. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about Union Minister Shivraj Singh has approved the extension of groundnut procurement in Gujarat. Then we will be talking about Mansukh Mandvi has inaugurated the first ever BIMSTEC Youth Summit that was inaugurated in Gujarat. Then Union Minister Manohar Lal Khattar has co-chaired the 4th India-UK Energy Dialogue in New Delhi. Then next thing is Dr. Jitendra Singh has launched India's first indigenous automated BMWTP Srijnam at AIMS New Delhi. What are all these things? We will be discussing in detail, and there are many more news in this video, students, so stay tuned with us till the end. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. We upload the weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise regularly to help you prepare for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs, and do share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors. Let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs, students. As you can see him in the picture, he is Shivraj Singh Chauhan, and he has approved the extension of the groundnut procurement in Gujarat by 6 days and in Karnataka by 25 days. This was extension, right? And here the government of India has also extended the time period for the procurement of soya bean in Maharashtra, and it has been extended by 24 days, and in Telangana it has been extended by 15 days, right? Take a note of it. So the procurement of groundnut in Gujarat extended by 6 days, in Karnataka extended by 25 days, soya bean procurement has been extended in Maharashtra by 24 days, and in Telangana it has been extended by 15 days, right? There is a scheme, students, that I want you all to remember, PM Asha. We discussed this yesterday also. It is Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan, right? This was launched during the 15th Finance Commission, and it is up to FY26. Correct. Now what is this scheme here? This is an umbrella scheme launched in 2018. The aim here is to provide the remunerative prices to the farmers and to control the price instability of the essential commodities for consumers. And here Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is the implementing agency for this. Correct. Apart from this, the government has also approved the procurement of soybean. We just saw in states such as Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana and so on. Moving on. Next is Union Minister Mansukh Mandvi has inaugurated the first ever BIMSTEC Youth Summit. It was inaugurated where? The location is important. This is in Gujarat, right? BIMSTEC Youth Summit. That is the first edition of this BIMSTEC Youth Summit in Gandhinagar, Gujarat. This was a 3-day long event that was held from 7th to 11th of Feb, and it bring together young leaders from across the world to discuss challenges and opportunities. This summit was jointly organized by the Ministry of Youth Affairs and Sport and Union Minister of External Affairs, and the Ministry of External Affairs, along with CII, that is Confederation of Indian Industry. Right here, the theme of this summit is important, students. Theme being youth as a bridge for intra-BIMSTEC exchange. Here, right, the critical role of youth in achieving the sustainable development goals was discussed here.
correct, and more than 70 young delegates from Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand attended this summit, correct. And here India has also proposed for the BIMSTEC as a youth bridge, right, and India has put forward a proposal for BIMSTEC to function as a youth bridge, where you will be seeing that the young leaders across the globe will be coming together, partnering, and will be working towards a common goal. Next is Manohar Lal Khattar, our Union Minister of Power, has recently co-chaired the 4th India-UK Energy Dialogue that was held in New Delhi. Take a note of this, right? During this dialogue, both the nations here worked on reviewing the progress that are made in the energy sector, and also the minister has launched the phase 2 of the Aspire program. This is important. Phase 2 of this Aspire. Now, what is this Aspire? Aspire means Accelerating Smart Power and Renewable Energy in India program. This is your Aspire program. Who is the Prime Minister of UK? Keir Starmer. What is the capital of UK? It is London, right? And what is the currency used here? It is Great Pound, or it is Pound Sterling. Moving on. Next is Union Minister Dr. Jitendra Singh has launched India's first indigenous automated BMWTP, that is Srijnam. It was launched at AIIMS, New Delhi. Now, what is this Srijnam, first of all, right? This direct question can be asked. This is a automated biomedical waste treatment plant. I repeat, automated biomedical waste treatment plant. This was developed by Trivandrum, Kerala-based Council of Scientific and Industrial Research, and their arm NIIST. Their arm is your National Institute for Interdisciplinary Science and Technology. Let me show here this Srijnam, right? This is automated biomedical waste treatment rig that can sanitize harmful biomedical waste like blood, urine, sputum, and lab disposables without relying on expensive high-energy incinerators. Correct. And with the daily capacity of 400 kilograms, it can initially process 10 kilograms of degradable medical waste per day. So this is your Srijnam, right? What is this? This is an automated, first indigenously made automated biomedical waste treatment plant, correct. And it was inaugurated where? It was launched at AIIMS, New Delhi. Correct. Who developed it? It was developed by CSIR's arm NIIST, that is National Institute for Interdisciplinary Science and Technology. Moving on. Next, India and Oman, they have signed an EPC that will enhance the archival cooperation, right? What is this EPC? EPC is an executive program of cooperation. So which two countries? India along with Oman, they have recently signed this EPC, executive program of cooperation, and it has been signed for a period of 2025 till 2028, correct. This EPC will strengthen the cultural and historical ties by facilitating the exchange of the archival materials, expertise and technology between the two nations. From India, it is NAI, that is your National Archives of India, right? And from Oman, it is NRAA, correct, that is National Records and Archives Authority. So from India, which authority? It is National Archives of India. And from Oman, which authority? National Records and Archives Authority. So these two organizations from these two countries, they have signed this EPC, Executive Program of Cooperation. It has been signed for the period 2025 till 2028, and here basically the exchange of archival materials, expertise and technologies will be shared here, correct. Here you will be seeing the exchange and the reproduction of the documents, the preservation of the historical manuscripts, various books that play a significant role in maintaining and preserving our culture and history. If we talk about NAI, that is your National Archives of India, where is the headquarter? It is located in New Delhi, established in 1891. Who is the Director General here of Archives? Arun Singhal. Next is MOLE has partnered with Found IT to boost the job opportunities for youth. What is MOLE? That is Ministry of Labour and Employment. They signed this MOU with Found IT, that was earlier known as Monster, that was a leading job portal, and they have collaborated basically to leverage the National Career Service portal to connect job seekers with the domestic and international opportunities, basically help the job seekers to land job, to help them grab the job opportunities, right? Take a note of this.
And this NCS portal, that is your National Career Service Portal, this was launched in 2015, which has more than 3.5 crore registered job seekers and 30 lakh employers. Correct. Next is India's DPIIT and South Korean Transport. They have signed this memorandum of understanding for collaboration in logistic and infrastructure under PM Gati Shakti. What is logistic? When you have to take goods from A location to B location, the amount of money that is required for this transportation of goods from A to B, it is your logistics, right? So recently India's DPIIT, that is your Department for Promotion of Industry and Internal Trade, this comes under the Ministry of Commerce and Industry. They have entered into a memorandum of understanding with Korea Transport Institute from the Republic of Korea, and this was basically facilitate the increase, or this will help us to boost the logistics sector, right? This will help us to develop the infrastructure that is needed in the logistics sector, and all these things will be done under the PM Gati Shakti National Master Plan. If we talk about PM Gati Shakti, it was launched by the Government of India on 13th of October 2021, and the main aim of this Gati Shakti National Master Plan is to provide multimodal connectivity infrastructure to various economic zones in India. Right, very important, so take a note of it. Moving on, next is science and technology. ISRO in partnership with IIT Madras developed indigenous semiconductor chip by the name IRIS, right? IRIS, correct? Take a note of this. This is indigenous. Let me give you the name full form later. First thing first, remember this indigenous semiconductor chip IRIS has been developed by which organization? Developed by ISRO in partnership with IIT Madras. Correct, take a note of this. And this IRIS has been built on the Shakti processor baseline. It has been built on the Shakti processor, right? It is the third Shakti based microprocessor chip that has been successfully fabricated by India. Earlier it was Remo in 2018, then Moshik, that was in 2020, and now IRIS in 2025. Correct. So this is your semiconductor chip that has been made on the Shakti microprocessor. Correct. This will basically help in the space sector, in semiconductor technology. Also, this will promote our Make in India initiative and promote the Atmanirbhar Bharat initiatives. Right. If we talk about this here, you can see Trivandrum, Kerala based ISRO Initial System Unit. Right. This is an arm of ISRO only. They in partnership with Tamil Nadu, Chennai based IIT Madras, they have made this semiconductor chip by the name IRIS. And what is the full form? Indigenous RISC V controller for space application. So this IRIS will be specifically using or will be used in the space application, right? And it has been built on the Shakti processor, and this is the third Shakti processor based microchip. Earlier was Remo and Moshik that we just saw earlier. Moving on, next is related to sports students. Mumbai Open 2025 was held, and as you can see here in the picture here, Jill Takeman has won the single title, and Pridankina and Anshaba has claimed the double title, right? So this Mumbai Open 2025 was held where? It was held in Mumbai, Maharashtra. This was the fourth edition of this event. It was held from 3rd to 9th of Feb, right? If we talk about the singles title, Jill Belin Takeman has won the single title, and double title, Elina Inovana and Amina Vladikova Anshaba, they have won the double title. Correct, take a note of both of them. Moving on, next is Sri Lanka's former captain Dimuth Karunaratne has announced retirement from international cricket, right? Former captain of Sri Lanka, as you can see, Frank Dimuth Karunaratne, popularly known as Dimuth Karunaratne, has announced retirement. Correct, directly remember this. Moving on to next is books and authors. So Vice President Jagdeep Dhankad has launched a book, I Am, right? This is the book compiled by the Gopinath P. Hinduja, the chairman of the Hinduja group, and the book here was, the launch event took place at the Vice President's Enclave in New Delhi. This book was published by Hinduja Foundation, and the book is basically divides into the theme of unity, spirituality and interfaith dialogue. Right, so take a note of this. And this book has been launched by whom? Jagdeep Dhankad, our Vice President. Next is Lieutenant General Upendra Dwivedi has launched a memoir titled I Am a Soldier's Wife, The Life and the Love of Tony Lider.
right? So Lieutenant General Upendra Dwivedi, who is the Chief of Army Staff, has launched the memoir titled I Am a Soldier's Wife, The Life and Love of Tony Lider. This book has been authored by Gitika Lider, the wife of late Brigadier Lakhvinder Singh Lider, as the Manekshaw Center in New Delhi. This book was published by Raleigh Books. Correct? And this book honors the Brigadier's Lakhvinder Singh's life as a soldier, husband, father, and leader, and acknowledges the forces of leadership, that is character, competence, conduct, and commitment. Moving on, next is your important days. International Day for the Prevention of the Violent Extremism as and when conclusive of terrorism, observed on 12th of Feb. This day is observed basically to raise awareness about the threats that are associated with the violent extremism that can lead to terrorism and enhance the international cooperation in addressing these challenges. This year it was the third edition of this day that was observed, and for the first time it was in 2023 that we observed this day. Moving on, next is your National Productivity Day, observed on 12th of Feb. And this National Productivity Day is observed globally, basically to promote the culture of productivity, efficiency, and innovation. The day also commemorates the Foundation Day of the National Productivity Council of India. This National Productivity Day is part of the National Productivity Week. National Productivity Week. We observe this week from 12th to 18th of Feb. Right, there is a theme for this, that is from ideas to impact, protecting intellectual property for competitive startups. Next is International Darwin Day, observed on 12th of Feb. This day is observed basically, this day basically serves the inspiration for the continuous advancements in scientific research and understanding. This day is observed on the birth anniversary of, as you can see him in the picture, his Charles Robert Darwin. Right, he was a very famous naturalist and geologist, right, and he launched a book also that was Theory of Evolution by Natural Selection. Correct? And to honor him and his work that he has done, right, this day is observed as the International Darwin Day on 12th of Feb. Next is related to state news, students. Odisha's cabinet has approved Antyodaya Gruha Yojana. This will provide pakka houses for the weaker sections of Odisha state. I repeat, the Odisha cabinet, that is headed by the Chief Minister Mohan Charan Manji, has approved the launch of this Antyodaya Gruha Yojana. This is a housing scheme that is aimed at providing the pakka houses. Pakka houses are the concrete, right, the build-up houses. This will be provided to the eligible vulnerable families, and 7,550 crore rupees has been allocated under this scheme. Each beneficiary here will be receiving a financial assistance of 1.2 lakh rupees to build a 25 square meter of pakka houses, right? This will also include your toilet area. The target here is that in the next 3 years, 2,25,000 pakka houses will be built, and the money will be provided to the individuals for the same. Correct? So that's all for the day, students. And one more state news here is that Maharashtra's government has announced or launched the Maitri 2.0. What is this Maitri scheme? Correct? This Maitri here is Maharashtra Industry Trade and Investment Facilitation Cell 2.0. This is an advanced digital platform that has been designed to to simplify the investment process. The portal here will ensure seamless experience for investors and businesses. Here the Chief Minister Devendra Fadnavis has officially launched the portal, making it fully operational, and it launches the follows Maharashtra's significant MOU worth 15.7 crore rupees. Correct? This Maitri is Maharashtra's dedicated agency for driving economic growth, fostering innovation, simplifying the investment process in the state, and many more. And now Maitri 2.0 has been launched by Maharashtra state. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Which country has recently become the first Caribbean nation to adopt India's popular instant payment platform UPI? It is Trinidad and Tobago, that is TNT. With this TNT, they became the first Caribbean nation to adopt the UPI. Next, which bank has recently launched the multi-currency world travel card, which allow the users to load and manage multiple currencies on a single card? It is Punjab National Bank. Right, this card supports 6 major foreign currencies, that is US dollar, euro, UAE, that is your United Arab Emirates dirham, then Britain or British pound sterling, Canadian dollar, that is CAD, and your Singapore dollar.
correct? That is your Singapore dollar. So these are the 6 currencies that are being supported here. Next, which non-banking financial company has recently partnered with RuPay to launch an equated monthly installment feature on UPI payments? So, which non-banking financial company? That is your Bob Card Limited. This is the NBFC. Here, the payments can be made via UPI at both online and offline merchants. And these payments can be converted into EMI at the checkout. Next, which insurance company has recently partnered with AU Small Finance Bank to offer life insurance solutions to their customers? It is Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited. This partnership will provide AU Small Finance Bank customers to access the Kotak Life's comprehensive life insurance products that includes your long-term, that includes your retirement, saving and investment plans. Next, for which country? Our country, India, has recently extended a budgetary support in the form of a rollover of 50 million treasury, $15 million treasury bills for another year. That is your $50 million T-bills. It is to Maldives, right? And this extension has been granted by State Bank of India, correct? In the form of T-bills, that is your treasury bills. Next, in September, SEBI, they have allowed Dash to sell credit default swaps, a move which aimed to boost the liquidity in the corporate bond market. So SEBI, they have allowed to sell the credit default swaps of in mutual fund, right? So I repeat, SEBI allowed mutual funds to sell these credit default swaps that will boost liquidity in the corporate bond market. Next, SEBI, they have introduced Dash, a process as an alternative to the reserve book building process for voluntarily delisting. So SEBI, they have introduced a fixed price process as an alternative to the reserve book building process for voluntarily delisting. As per this new framework, the promoters, they can offer to buy back all the publicly held shares at a price at least 15% higher than the fair price of the stock, and this new framework will be applicable to only those companies whose shares are frequently traded. Next, which bank has recently launched Sugam Rin Bhugtan Yojana, that is Sugam scheme? This is a one-time settlement, negotiated settlement scheme to recover non-performing retail loans. It is IDBI Bank, right? And this scheme, it runs from 2nd September 2024 to 25th of March 2025, and this scheme will provide distressed borrowers a chance to settle the dues and allow the avoiding the legal complications. Next, which organization or bank has recently provided a loan worth 31,673.79 crore rupees to Mumbai Metropolitan Region Development Authority to fast track the development of 9 key infrastructure projects? It is PFC, that is your Power Finance Corporation, and the major amount sanctioned is 15,071 crore rupees will be allocated to specifically for Thane Borivali Twin Tunnel project. Do remember that also. Next, which organization recently launched a dedicated foreign portfolio investor outreach cell as a part of an alternative investment fund and foreign portfolio investors department? So which is that organization? It is SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. This was a part of SEBI's AIF, Alternative Investment Fund, and FPI's department, that is Foreign Portfolio Investors Fund department. Next is SEBI. They have made UPI mandatory for individual investors applying for up to Dash in debt security public issue from 1st of November 2025. So SEBI, they have made UPI mandatory for individual investors applying for up to 5 lakh rupees in debt security public issues. This will provide, or these provisions, they will basically be applicable from 1st of November 2024, and this will streamline the application process for the public issue of debt securities, non-convertible redeemable preference shares, municipal debt securities and securities debt instruments. Next, as per NPCI recent notification, auto replenishment of Dash and RuPay National Common Mobility Card will no longer require the standard 24-hour pre-debit notification, right? So the auto replenishment of FASTag, that is NETC FASTag, correct, and NCMC National Common Mobility Card, they won't be requiring any 24-hour standard pre-debit notification, correct? And now you will be seeing these FASTags, they will also be linked to your
satellites, right? And it will, you don't have to wait on the highways, directly using the GPS your amount will be deducted. Next, SEBI, they have recently announced a new framework to curb the excessive speculation in the dash with effect from 20th of November 2024. So it is to basically curb the excessive speculation in the stock market, right? And these new rules, they will be coming into effect from 20th November. Earlier, SEBI constituted an expert working group to review the regulatory framework to protect the investors and foster the growth of equity derivatives market. Next, which state has recently signed a memorandum of understanding with REC Limited for the financial support of 3 lakh crore rupees for the infrastructure projects? It is the Rajasthan state, right? And according to this MOU, REC Limited, they will provide a financial support of 50,000 crore rupees per annum to fund these projects, and this partnership will support the development of both power and non-power infrastructure in the Rajasthan state. Next, which financial institution has recently announced to invest over $272 million to support India's economic growth and sustainability? It is United States International Development Finance Corporation. Here, this investment includes key allocations such as $40 million loan to Mumbai, Maharashtra-based APAC Financial Services Private Limited, and DFC is focusing on women empowerment through a $50 million loan to Mumbai, Maharashtra-based Incred Financial Services. Next, which state has recently received $162 million loan from Asian Development Bank to enhance the tourism development? It is Himachal Pradesh. Right? Himachal Pradesh is the state that has received this $162 million loan from Asian Development Bank to enhance the tourism development in areas such as the districts of Mandi, Hamirpur, Kullu, Hamirpur, Kangra. These locations, these districts will be benefited the most. Next, which ministry has recently released the new guidelines for handling delays in submitting income tax return? So it is Ministry of Finance. They have recently released the new guidelines. These new guidelines will supersede any previous guidelines, and they will be coming into effect from 1st of October 2024. Right? Take a note of it. Next, SEBI, they have recently reduced the training lot size for privately placed infrastructure investment trust to how much? To 25 lakh rupees from 1 crore earlier, right? So in which these are your infrastructure investment trust, right? And SEBI, they have reduced the training lot size for them to 25 lakh rupees, that was earlier 1 crore rupees. Also, these regulations came into effect from the day of their official notification of SEBI, while some of the provisions will come into force 60 days later. Next, which NBFC has recently raised 100 crore rupees from Mizuho Bank Limited of Japan? So it is Satya Micro Capital Limited. They have recently raised 100 crore rupees from Mizuho Bank Limited of Japan. Next, name a new saving bank account that was recently launched by Bank of Baroda for high-end customers desiring premium services. It is Masterstock, right? And Bank of Baroda also named Sachin Tendulkar as their global brand ambassador. Next, which bank has recently partnered with PhonePe to offer instant credit on UPI to its pre-approved customers through PhonePe application? It is ICICI Bank. And this strategic partnership will enable the pre-approved customers of the ICICI Bank to use the credit line facility for UPI transactions. Under this instant credit offer, eligible customers can access up to 2 lakh rupees of credit with a 45 days repayment period. Next, which organization has recently secured its largest ever foreign currency term loan of $1.265 billion? It is PFC, Power Finance Corporation Limited. Next, which NBFC has recently received the in-principle approval from SEBI to establish a mutual fund business? It is Geo Financial Services Limited. And this final approval for registration will be granted by SEBI subject to the fulfillment of the requirements by Geo Financial Services Limited and BlackRock laid out by SEBI. Next, which airline has recently partnered with SBI Cards and Payment Services to launch two co-branded credit cards, that is KrisFlyer SBI Card and KrisFlyer SBI Card Apex? It is Singapore Airlines that has recently partnered with SBI Cards and Payment Services Limited to launch these two co-branded credit cards. Next,
Which bank has recently partnered with the International Finance Corporation to provide a loan worth $500 million to help develop a blue finance market in India? It is Axis Bank Limited. This market or this marks the first blue investment, correct? Blue investment is basically for the maritime economy, correct? And this marks the first blue investment by IFC in India and the first blue transaction by a financial institution in the country. Next, which NBFC has recently raised $25 million senior secured debt facility from Asian Development Bank? It is your Vivriti Capital Limited. And this is a 4-year tenure bond and is the first by an NBFC which will be used to expand their green finance portfolio. Next, SEBI, they have changed the nomination rule to allow the holders of mutual funds and demat accounts to include up to dash nominees, to include up to 10 nominees. Next, which bank has recently approved an in-principle loan of 15,000 crore rupees to Andhra Pradesh for developing Amravati as its capital city in collaboration with the Asian Development Bank? It is World Bank, right? The total project cost 49,000 crore rupees with 15,000 crore rupees being a soft loan from World Bank. Next, students, is our homework section. First is tell me the name of the country along which India has signed a memorandum of understanding where they will be working on the extraction of critical minerals and doing research and development on the critical minerals. Second question is SNACC, SNACC. This is a 15 minutes food delivery platform launched by which organization? Name that. Third question, tell me recently which country has hosted the 28th edition of CSPOC? What is the full form of this CSPOC? Why was this hosted and which country hosted it? Then fourth question is recently which state has signed a memorandum of understanding with Infosys, right? And this is basically for the skill census pre-validation, correct? Apart from this, name the person who has launched this National Turmeric Board that supports the farmers. And what is this National Turmeric Board? Why it has been established? So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 13 फरवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अभी ग्राउंडनट के प्रोक्योरमेंट की एक्सटेंशन दी गई है फॉर गुजरात एंड कर्नाटका। देन मनसुख मांडविया जी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट जो कि गुजरात में हुई, जहाँ पे यूथ यंग लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेशन किया एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की। देन मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने को चेयर किया 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, जहाँ पे फोकस रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पर। नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं सृजनम, ये लॉन्च किया गया एम्स न्यू दिल्ली में। ये सृजनम क्या है इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ऐसी और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती है जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, पेरेंट्स, सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दो एंड उनको इस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बताओ। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in.
Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आप इनको पिक्चर में देख रहे हैं। इनके द्वारा अभी रिसेंटली जो ग्राउंड नट है, राइट, मूंगफलियाँ, उनका जो प्रोक्योरमेंट है इन गुजरात, उसको 6 दिन से एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड कर्नाटका में ग्राउंड नट की प्रोक्योरमेंट को 25 दिन से एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट, एंड इट इज़ रिस्पेक्टिवली बियॉन्ड द नॉर्मल प्रोक्योरमेंट पीरियड ऑफ 90 डेज। इसी के अलावा अगर ध्यान देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी सोयाबीन है, राइट, उसका भी प्रोक्योरमेंट एक्सटेंड कर दिया गया है 2 स्टेट्स में। महाराष्ट्र स्टेट में देखें तो 24 दिन से एक्सटेंड कर दिया गया है, एंड तेलंगाना स्टेट में देखें तो 15 दिन से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के अंदर स्टूडेंट्स एक स्कीम आ जाती है पीएम आशा स्कीम। वो क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी जो फूड, जो आपकी वेजिटेबल्स हो गई या फिर आपके ग्रेन्स हो गए, राइट, ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं, एंड इनकी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं प्राइस में, वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो सके, उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड प्राइस सडनली बहुत शूट अप या शूट डाउन ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर FY26। अगर पीएम आशा स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, राइट, जो प्राइस इनस्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मनसुख मांडविया जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला बिम्स्टेक यूथ समिट को गांधीनगर गुजरात में। देखो, यूथ की बात की गई है तो मतलब यहाँ पे यूथ पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। यंग लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड में जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की गई, ताकि साथ मिलकर, राइट, नॉलेज शेयर करके एक दूसरे साथ मिलकर हम यहाँ पे इस फीट को अचीव कर सकें। ऑल्सो इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ये थीम रहेगी जहाँ पे क्रिटिकल रोल रहेगा यूथ का इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2030। यहाँ पे 70 से भी ज़्यादा यंग डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड मैनी मोर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, एंड ये हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। इन्होंने को चेयर किया चौथा इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग को न्यू दिल्ली में, राइट। अब देखो, इंडिया और यूके के बीच में हम देखो जो मेन चीज़ है ना, वो है एनर्जी के ऊपर ये डील, राइट, ये डायलॉग। यहाँ पे हम फोकस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी पे यहाँ पे फोकस रहेगा, एंड दोनों कंट्रीज़ देखते हैं, एंड दोनों कंट्रीज़ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो करने का काम करते हैं। इन दोनों के द्वारा अभी फेज़ 2 भी लॉन्च किया गया है एस्पायर का। अब ये एस्पायर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्पायर आ जाता है आपका एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया प्रोग्राम, राइट। ये फेज़ 2 है इंडिया और यूके के बीच में, ये एस्पायर इनिशिएटिव का, करेक्ट। इसका फेज़ 2 लॉन्च किया गया है, टेक अ नोट ऑफ इट। अगर मैं यूके की बात करूँ, यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। कैपिटल क्या रहेगी? लंदन। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड BMWTP सृजनम एम्स न्यू दिल्ली में, राइट। ये BMWTP क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये है आपका ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, राइट, उसको ट्रीट करने के लिए, राइट, उसको सिक्योरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस प्लांट को सेटअप किया गया है, एंड ये इंडिजीनियसली बिल्ट प्लांट है, मतलब इंडिया की में ही इसको बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? CSIR का एक आर्म है, NIIST, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये त्रिवेंद्रम केरला में है, उनके द्वारा इस सृजनम को बनाया गया, और इसको कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है? एम्स न्यू दिल्ली में इसको डिप्लॉय कराया गया है, राइट। ये रिप्लेस करेगा कॉस्टली एंड एनर्जी इंटेंसिव इंसिनरेटर्स को, जो कि बेसिकली आपकी फ्रेगरेंस भी रिलीज करते हैं, टॉक्सिक स्मेल्स भी होती है उससे रिलीज, काफ़ी पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, एनर्जी भी बहुत कंज्यूम होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है उसको चलाने के लिए, उस सबको ये रिप्लेस कर देगा सृजनम, राइट। ये एक ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग है, जो कि सैनिटाइज कर सकती है हार्मफुल बायोमेडिकल वेस्ट लाइक ब्लड, यूरिन, स्पूटम एंड अदर लैब डिस्पोजेबल्स को। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि EPC साइन की गई है ताकि जो आर्काइवल कॉपरेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये बेसिकली आर्काइव्स क्या होते हैं? जो हमारा कल्चर है, राइट, जो हमारी हिस्ट्री है, तो बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होंगे, ऐसी किताबें होंगी, ऐसे हमारे
रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हमारे हिस्ट्री को सिग्निफाई करते हैं, राइट, हमारे हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं, हमारे ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं। तो उन सबको प्रिजर्व करने के लिए, उन आर्काइव्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनके ऊपर स्टडी करने के लिए, राइट, यहाँ पे इंडिया और ओमान के द्वारा ये ईपीसी साइन किया गया है। ईपीसी क्या है? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन। ये साइन किया गया है 2025 से लेकर 2028 तक साइन किया गया है, ताकि इन आर्काइव्स पर, राइट, रिसर्च की जा सके, उनको स्टडी किया जा सके, राइट, एक्सपर्टीज़ को वो शो किया जा सके, उस आर्काइवल मटेरियल को प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जा सके, करेक्ट, ताकि एक दूसरे की हम जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सके। यहीं पे दोनों कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस भी ध्यान रखेंगे। इंडिया से आ जाती है NAI जो कि है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, एंड ओमान की आ जाती है नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी, राइट, NRRA। तो इन दोनों के बीच में ये EPC एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है इन आर्काइव्स को स्टोर करने के लिए एंड उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके द्वारा भी फाउंड IT, जिसको पहले हम मॉन्स्टर्स के नाम से जानते थे जिस प्लेटफॉर्म को, उनके साथ यहाँ पे टाई अप किया गया ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए इन यूथ। बेसिकली क्या होता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जॉब सीकर्स होते हैं, वो जॉब्स ढूंढते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब्स ढूंढते हैं। तो और कई सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि ये जॉब्स यहाँ पोस्ट करते हैं। तो उनको यहाँ पे जॉब सीकर्स को इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचाने के लिए, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। एंड ये बेसिकली लेवरेज करेगा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को, जो कि लॉन्च किया गया था 2015 में, जहाँ पे 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स हैं एंड 30 लाख एम्प्लॉयर्स हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया के DPIIT जो कि है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है साउथ कोरियन ट्रांसपोर्ट के साथ, ताकि जो लॉजिस्टिक है एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडर PM गति शक्ति, उसको और बेटर किया जा सके। देखो PM गति शक्ति क्या था, बेसिकली ये लॉन्च किया गया था, ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जिसके अंडर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने का काम किया गया था। बेटर रोड्स होंगे, राइट, बेटर ट्रैकिंग होगी, बेटर रेलवे स्ट्रक्चर्स होंगे, बेटर एयरपोर्ट, एयरवेज, वाटरवेज, पावर ट्रांसमिशन बेटर की जाएगी, एंड एक इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा ताकि जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक होती है एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स ले जाना, राइट, उसको लॉजिस्टिक कहते हैं। उसके खर्चे को कम करने के लिए ये नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था, गति शक्ति, PM गति शक्ति प्लान, करेक्ट। इससे मेन एम क्या था कि हम लॉजिस्टिक को अपना ईजी कर सकें, राइट, कनेक्टिविटी दो लोकेशन के बीच में इंक्रीज कर सकें ताकि ट्रेड फ्लरिश हो सके एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पर कम हो सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। इवन आप देखेंगे एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। ये भी क्या था कि दो लोकेशन को हम बेटर और ईजिली हम कनेक्ट कर सकें ताकि लोगों की आवाजाही हो, आवाजाही होगी तो ट्रेड फ्लरिश होगा, करेक्ट। तो इंडिया के DPIIT एंड साउथ कोरियन ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये MOU साइन हुआ ताकि इंडिया में जो लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडर PM गति शक्ति, उसको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी इसरो ने पार्टनरशिप की IIT मद्रास के साथ एंड सेमीकंडक्टर चिप को डेवलप किया है जिसका नाम है आइरिस। आइरिस बेसिकली याद रखेंगे ये वो थर्ड चिप है जो कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पे बनी है, राइट, जो मतलब शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करने वाली ये थर्ड ऐसी माइक्रो चिप है, करेक्ट, सेमीकंडक्टर चिप है। इस सेमीकंडक्टर चिप को यूज़ किया जाएगा स्पेस एप्लीकेशंस के लिए, राइट, जो भी जैसे गगनयान हो गया, राइट, जो भी स्पेस एप्लीकेशन होंगे उसमें यहाँ पे इस चिप को, आइरिस को यूज़ किया जाएगा। अब जैसे मैंने बोला ये थर्ड ऐसी सेमीकंडक्टर चिप है, तो इससे पहले RIMO 2018 में डेवलप की गई थी जो कि शक्ति बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप रहती है, राइट। शक्ति बेसिकली आपका एक प्रोसेसर है, उसको यूज़ करके ये रिमो बनाई गई थी 2018 में। देन उसके बाद मौसिक बनाई गई थी 2020 में। अब बनाई गई है आइरिस 2025 में, करेक्ट। तो आइरिस की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। आइरिस है इंडिजीनियस RISC वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। इनके द्वारा ये शक्ति बेस्ड प्रोसेसर, ये शक्ति प्रोसेसर बेस्ड ये सेमीकंडक्टर चिप रहेगी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। मुंबई ओपन हुआ, अभी हमें मुंबई ओपन देखने को मिला। ये 4th एडिशन था मुंबई ओपन का, राइट। एंड यहाँ पे वीमेन सिंगल टाइटल एंड आपका डबल टाइटल। वीमेन सिंगल टाइटल में जिल टेकमैन इन्होंने जीता एंड डबल्स टाइटल यहाँ पे प्रिदेनकिना एंड अशाबा, इनके द्वारा यहाँ पे डबल्स टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन दिमुथ करुणारत्ने, राइट। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर।
आई एम बुक का नाम रहेगा। इस बुक को लॉन्च किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। इस बुक को कंपाइल किया गया है बाय गोपीचंद पी हिंदुजा, जो कि चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप के। एंड इस बुक को लॉन्च किया गया था एट द वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव इन न्यू दिल्ली। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हिंदुजा फाउंडेशन। एंड ये बुक बेसिकली यूनिटी, स्पिरिचुअलिटी, इंटरफेथ डायलॉग, इनके ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट आ जाती है फिर एक मेमोयर है जो है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड द लव ऑफ टॉनी लेदर। राइट, ये बुक बेसिकली ऑनर करती है ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लाइफ एज अ सोल्जर, हस्बैंड, फादर एंड अ लीडर, एंड कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस, कंडक्ट एंड कमिटमेंट को ये शोकेस करती है। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा रॉली बुक्स के द्वारा। इस बुक को ऑथर किया गया है गीतिका लेडर, जो कि वाइफ है लेट ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह की। एंड इस बुक को मानेकशा सेंटर में लॉन्च किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। करेक्ट। एंड कौन इसको लॉन्च करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके द्वारा ये मेमोयर यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म, 12 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म होता है ना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं लीड करता है कि हाँ टेररिज्म क्रिएट हो जाए। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड ये एक्सट्रीम वायलेंस, राइट, ज़्यादा वायलेंट ना हो, कोई भी फोर्स हो ज़्यादा वायलेंट ना हो सके, वो जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म होता है यही कहीं ना कहीं टेररिज्म को जन्म देता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार 3rd एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। पहली बार 2023 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, मार्क करके चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 12 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका बेसिक एम क्या है? ताकि प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जा सके, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जा सके, इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जा सके। राइट, एक और जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, ये ऑब्जर्व किया जाता है 12 से लेके 18 फरवरी तक। इसी की एक थीम रहेगी, थीम है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। ये यहाँ पे थीम रहेगी इस नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल डार्विन डे 12 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। राइट, चार्ल्स डार्विन हम जानते हैं, काफ़ी फेमस ये एक नेचुरलिस्ट थे एंड जियोलॉजिस्ट थे। एंड इनके द्वारा जो डार्विन थ्योरी दी गई थी ऑफ एवोल्यूशन के, मतलब हमारा एवोल्यूशन हुआ है एंड हर टाइम जो भी स्पीशीज होती है वो एक कांस्टेंट एवोल्यूशन करती रहती है। 20 साल बाद, 100 साल बाद आप देखेंगे और आज हमें देखेंगे तो हम भी इवॉल्व होकर 100 साल बाद हमारे जीन्स चेंज हो जाएंगे। राइट, तो ये एक प्रोसेस है एवोल्यूशन की। करेक्ट, तो 12 फरवरी को इनका जन्मदिन आता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इंटरनेशनल डार्विन डे ऑब्जर्व करते हैं 12 फरवरी को, इनको ऑनर करने के लिए, इनकी रिसर्च और इनके काम को। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। ओडिशा कैबिनेट, जो कि हेड किया जाता है बाय चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी, इनके द्वारा भी अप्रूव की गई है एक स्कीम जो कि है अंत्योदय गृह की योजना। राइट, ये बेसिकली क्या है? पक्का घर प्रोवाइड कराने के लिए टू द वीकर सेक्शन, जो भी वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे पक्का घर प्रोवाइड कराने का ये काम करेंगे। 1.2 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे। करेक्ट, ताकि इंडिविजुअल्स जो भी यहाँ पे वल्नरेबल फैमिलीज हैं वो 25 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे अपना घर बना सके, जिसमें एक टॉयलेट की फैसिलिटी भी होगी, इन हाउस टॉयलेट होगा यहाँ पर। राइट, एंड इस स्कीम के अंडर बोला जा रहा है आने वाले 3 सालों में 2,25,000 से भी ज़्यादा पक्का घर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे इंडिविजुअल्स को। इसके लिए सरकार 7,550 करोड़ रुपए खर्च करने का काम करेगी। तो ये है आपका अंत्योदय गृह योजना। राइट, कि वीकर सेक्शन जो है ओडिशा स्टेट में उनको पक्का घर प्रोवाइड कराने का ये काम करेगी। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन्होंने मैत्री 2.0 लॉन्च किया है। मैत्री बेसिकली एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र सरकार का कि कैसे इन्वेस्ट करना है पैसा, कैसे इनोवेशन लानी है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, उसका ध्यान रखती है। ये महाराष्ट्र की डेडिकेटिंग एजेंसी है। राइट, एंड इसी का भी वर्जन 2.0 लॉन्च किया है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। मैत्री की फुल फॉर्म भी देख लो, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल 2.0 पोर्टल। राइट, ये अभी यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि सिंप्लीफाई करता है इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस को एंड महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी टॉप किया इन द रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि वीपो के द्वारा रिलीज किया गया। तो ये आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये कौन सा एडिशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का? तो ये 17th एडिशन है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वीपो के द्वारा रिलीज किया गया। एंड यहाँ पे किस कंट्री ने टॉप किया इन दिस? तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा टॉप किया गया है यहाँ पर फॉर द 14th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। एंड इंडिया की हमारे यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? इंडिया आ जाता है 39th पोजीशन पे।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआईज रीसेंट रिपोर्ट जो कि है डोमिनेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट विल एंड बाय 2030, और जब तक हम 2030 में अचीव करेंगे राइट कि जो फॉसिल फ्यूल्स से एनर्जी जनरेशन है वो खत्म हो जाएगा, एंड 50% ऑफ जो ग्लोबल एनर्जी का जो कंजप्शन होगा ना वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होगा. Next, who has topped the 2024 Huron India Under 35 list by Huron India in September 2024. तो ये अंकुश सचदेवा के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया. ये 31 ईयर्स के हैं राइट. ये आईआईटी ग्रेजुएट हैं ऑफ कानपुर, एंड ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शेयर चैट के एंड मौज के, जो इंडिया का लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिलीज की रिपोर्ट जो कि है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जो हाईलाइट करता है चैलेंजेस इन एक्सटेंडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन. तो ये आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया. नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग बाय आईएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. तो इंडिया आ जाता है 58 पोजीशन पे राइट, एंड यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव टाइम. नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105th पोजीशन पे आ जाता है. ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 19th एडिशन था, एंड यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वो 109th पोजीशन पे आ जाता है. वहीं पे हमारा इंडिया एक सीरियस कैटेगरी में मेंशन किया गया, मतलब कैटेगरी वाइज देखें तो सीरियस में आता है इंडिया. नेक्स्ट, हु हैज टॉप द फॉर्चून्स 2024 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट. तो मैरी बेरा ने यहाँ पे टॉप किया. मैरी बेरा ये कौन है? ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूएसए बेस्ड जनरल मोटर्स की. नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने अभी रिलीज किया कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे फॉर जुलाई 2022 टू जून 2023 एज अ पार्ट ऑफ 79th राउंड ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे. तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज किया 15th एडिशन ऑफ देयर बाइनियल असेसमेंट 2024 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट अ सिस्टम इन पैरल. तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसको रिलीज किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं उस इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया इंडिया के 100 रिचेस्ट 2024 लिस्ट में. तो मुकेश अंबानी जी के यहाँ पर द्वारा टॉप किया गया. बट एक चीज़ याद रखेंगे, मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी इन दोनों की जो नेटवर्थ है ना वो $100 बिलियन से भी नीचे अब आ गई है राइट. एंड ये जो $100 बिलियन क्लब में ये पार्ट होते थे अब नहीं है. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने भी रिलीज किया द रिपोर्ट द ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे फॉर FY22. तो किसके द्वारा रिलीज किया गया? ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिवील किया दैट इंडिया हैज़ 129 मिलियन सिटीजन्स जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं. तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया डाटा? वर्ल्ड बैंक बताता है कि इंडिया में 129 मिलियन ऐसे लोग हैं दैट आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली रिलीज किया रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2024 इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो कि एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म है, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड व्हाट विद 188 6G रिलेटेड पैटर्न्स. तो इंडिया की रैंक 6th रहेगी यहाँ पे 6G रिलेटेड 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट रिलेटेड पैटर्न्स में. चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है इन दिस, जहाँ पे चाइना के 6001 पेटेंट्स हैं 6G रिलेटेड. नेक्स्ट, किस रिलीजन ने या फिर किस रिलीजन की सबसे ज़्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है इंडिया में? वो है सिक्स की. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वर्ल्ड लाइन्स रिपोर्ट इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 24 जो टोटल नंबर ऑफ यूपीआई पेमेंट्स है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन है वो बढ़ गई टू 78.97 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024. नेक्स्ट है किस कंट्री विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर FY23. इंडिया ने $1 ट्रिलियन यहाँ पे FDI टारगेट को अचीव कर लिया इन द पास टोटल मिला के. एंड मॉरिशस से सबसे ज़्यादा हमें एज अ होल देखने को मिला, बट FY24 में USA से सबसे ज़्यादा हमें FDI दिखा. नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली रिलीज की स्टडी दैट स्टेट्स कैंसर केसेस और जो डेथ्स हैं राइट ब्रिक्स कंट्रीज में बढ़ जाएंगे एंड इंडिया में और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हमें केस देखने को मिलेंगे 2022 से 2045 के बीच में. ये किसके द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया है? ये डाटा रिलीज़ किया गया है ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ओवर 11.5 लाख चिल्ड्रन अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज आर वल्नरेबल टू चाइल्ड मैरिज इन FY24. तो वो ये बच्चे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ वल्नरेबल हैं. ये डाटा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स के द्वारा रिलीज किया गया. आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताओ कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है अभी भी 2024-25 में.
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिलीज किया एक फ्लैगशिप रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, जो बताता है इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली ICMR इंडिया डायबिटीज़ सर्वे को कंडक्ट करा, जो कि इंडिया में जो डायबिटीज़ की प्रिवलेंस है उसके बारे में बताता है, राइट। ये किसके द्वारा रहा? मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली रीगेन किया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रीएस्ट इकोनॉमी का टाइटल, राइट, जो कि फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी इसमें। तो हांगकांग ने रीगेन किया इस टाइटल को, हांगकांग फर्स्ट पे आ जाता है एंड सिंगापुर इस पोजीशन में सेकंड पे रहेगा। Next, students, is our homework section. First is, tell me the name of the country along which India has signed a memorandum of understanding where they will be working on the extraction of critical minerals and doing research and development on the critical minerals. Second question is SNACC, SNACC. This is a 15 minutes food delivery platform launched by which organization? Name that. Third question, tell me recently which country has hosted the 28th edition of CSPOC? What is the full form of this CSPOC? Why was this hosted and which country hosted it? Then fourth question is, recently which state has signed a memorandum of understanding with Infosys, right? And this is basically for the skill census pre-validation, correct? Apart from this, name the person who has, or basically name the person who has launched this National Turmeric Board that supports the farmers. And what is this National Turmeric Board? Why it has been established? So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.